Hello everyone, this is Jaikan Gupta and welcome to my YouTube channel. I am doing lecture series on engineering mechanics and today we will study about the force system. Before that last वीडियो में हमने काफी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा था. हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स के लिए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए. उसके बाद हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, उसके क्लासिफिकेशन और ब्रांचेस के बारे में, एंड फाइनली हमने फोर्स को काफी सिंपल वर्ड से डिफाइन किया था. लास्ट वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल पे डायरेक्टली आकर देख सकते हैं. सो आज हम पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में. अगर मैं फोर्स सिस्टम बोलता हूं, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स सिस्टम का मतलब होता है मोर देन वन फोर्स. अगर किसी सिस्टम में मोर देन वन फोर्स है तो वो कहलाता है फोर्स सिस्टम. अ सिस्टम हैज मोर देन वन फोर्स इज नोन एज फोर्स सिस्टम. अब देखते हैं फोर्स सिस्टम को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे. ये क्लासिफाई होता है दो टाइप से, कोप्लानर फोर्सेस एंड नॉन कोप्लानर फोर्सेस. अब नाम से पता चल रहा है व्हाट इज कोप्लानर फोर्सेस. इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन they are known as a coplanar forces, and if the number of the forces are in the different plane then they are called as a non coplanar forces. coplanar forces further classify होता है चार टाइप से: collinear forces, concurrent forces, parallel forces and non concurrent non parallel forces. इस non concurrent non parallel forces को हम लोग बोलते हैं जनरल फोर्स सिस्टम. और फर्दर नॉन कोप्लानर फोर्सेस क्लासिफाई होता है फर्दर तीन टाइप से: concurrent forces, parallel forces and non concurrent non parallel forces. This is also known as a general force system. देखिए कोप्लानर और नॉन कोप्लानर फोर्स का जो क्लासिफिकेशन है फर्दर, उसमें ये तीन चीजें कॉमन है. क्या क्या? concurrent forces, parallel forces and non concurrent non parallel forces. ये इसमें भी है concurrent forces, parallel forces and non concurrent non parallel forces, except this collinear forces. Why? Because अगर फोर्सेज आर कोलिनियर, अगर बहुत सारे फोर्सेज एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है, मींस कि सेम प्लेन. सो दैट्स व्हाई कोलिनियर फोर्सेज को छोड़ के दोनों का फर्दर क्लासिफिकेशन सेम है. नाउ हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले देखेंगे हम लोग कोप्लानर फोर्सेज होता क्या है और नॉन कोप्लानर फोर्सेज होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. अब कोप्लानर फोर्सेज जैसे मैंने पहले भी बताया, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेज आर इन द सेम प्लेन दे आर नोन एज अ कोप्लानर फोर्सेज. कैसा हो सकता है देखते हैं. सी दिस इज अ प्लेन, ये एक प्लेन बना रहा हूं मैं. ओके, लेट दिस इज अ प्लेन. ओके, एंड लेट दिस इज अ फोर्सेज F1, F2, F3. ओके, सो देखिए ये एक प्लेन है, उसमें तीन फोर्सेस हैं F1, F2 एंड F3. सो दीज थ्री फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कोप्लानर फोर्सेस. ओके, एक और फिगर देखते हैं नॉन कोप्लानर फोर्सेस को समझने के लिए. सो व्हाट इज नॉन कोप्लानर फोर्सेस? लेट्स सी. ओके, लेट्स सी इन अ फिगर. Let this is F1, let this is F2 and let this is F3. यहां पे देखिए these three forces F1, F2 and F3 they are in the different plane and they are known as a non coplanar forces. देखिए ये F1 इस प्लेन पे है, this one, F2 ये ऊपर वाले प्लेन पे और F3 ये साइड वाले प्लेन पे है. So these forces are called as a non-coplanar forces because they are in the different plane, and these forces are called as a coplanar forces because they are in the same plane. Okay, I think this is clear. Next we will move to the collinear. What is collinear forces? अभी मैंने आपको समझाया था और ये नाम से भी पता चलता है. As the name suggests, what is collinear forces? If number of forces are in the same line, they are known as a collinear forces. Their direction may be same or may be different, it doesn't matter, but if the number of forces are in the same line they are known as a collinear forces. So collinear forces को देख लेते हैं. Let it be like this. Let this is F1, F2, F3, F4 and F1.
देखिए ये 5 फोर्सेज हैं, F1, F2, F3, F4, F5, दे आर इन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे हैं, their direction may be same or may be different, so they are called as a collinear forces. Okay, let's see another example. Okay, let this is 5 forces, let it be like F1, F2, F3, F4, F5. यहाँ पे भी 5 फोर्सेस हैं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे भी these all forces are in the same line, that's why they are called as a collinear forces. Let's see another line and collinear forces, एक inclined भी ले लेते हैं, let it be like this F1, F2, F3, F4 and F5. See these 5 forces, they are in the same line, again their direction may be same, may be different, but they are in the same line. So this all 3 examples, this all forces in this 3 examples, they all are in collinear forces. F1 to F5, here they are collinear forces, here also they are collinear forces, and here also they are collinear forces. So this is all about the collinear forces. Next we'll move to the concurrent forces. This concurrent forces is very important in engineering mechanics. So what is concurrent forces? If the number of forces are passing through a common point, they are known as a concurrent forces. बहुत सारे फोर्स एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं तो वो कहलाते हैं concurrent forces. Their direction may be inward, may be outward. But if the number of forces passing through a common point, then they are called as a concurrent forces. Let's see. Let this is a point O, and let's see. This is force F1, let this is force F2, let this one is F3, let this is F4, and let this is F5. See, this is a point O. See here 5 forces are there and they are passing through a common point O. So these all forces are known as a concurrent forces. Their direction may be inward or may be outward. It doesn't matter, but if the number of forces passing through a common point, they are called as a concurrent forces. I think this is clear and this is very important. Okay, next we will see parallel forces. So parallel forces नाम से ही पता चल रहा है, if the forces are parallel to each other, if the forces are parallel to each other, they are called as parallel forces. Okay, or if the line of action of forces are parallel to each other, they are called as a parallel forces. Okay, so parallel forces कैसा हो सकता है देखते हैं. Okay, देखते हैं इसका एग्जांपल्स. सी सिंपल सा ये है दिस, let it be, ये F1, F2, F3, these forces are parallel to each other, so they are known as a parallel forces. The direction may be same, may be different. Parallel forces parallel होना चाहिए, जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है. तो एक और एग्जांपल देखते हैं. Let it is like this and again let it be like this. So let it F1, F2 and F3. So this both set of forces, these 3 forces are parallel forces, these 3 forces are parallel forces. They may be inclined like this. F1, F2 and F3. So these forces also are parallel forces. If the number of forces whose lines of actions are parallel to each other, they are known as a parallel forces. Okay, next we will see ये parallel forces further classify होता है 2 टाइप से. Again they are called as a like parallel forces and unlike parallel forces. How? Okay, so ये further classify होता है, this is like parallel forces and unlike parallel. Like parallel forces and unlike parallel forces.
अब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? इफ द फोर्सेस और इफ द पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम डायरेक्शन, अगर बहुत सारे पैरेलल फोर्स का सेम डायरेक्शन है तो दे आर कॉल्ड एज अ लाइक पैरेलल फोर्सेस। एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये बहुत सारे फोर्स हैं, let it be like this, F1, F2, F3, F4. These forces are in the same direction and they are parallel to each other. That's why they are known as a like parallel forces. Unlike parallel forces क्या हो सकते हैं? If the forces are in the different direction or opposite direction. See, unlike parallel forces का example ले लेता हूं मैं। देखिए ये so this F1 and F2. So these are known as a unlike parallel force. If the parallel forces having the same direction, they are called as a like parallel forces, or if the parallel forces having the opposite direction, they are known as a unlike parallel forces. I think this is clear to all of you. Okay. Next we will see the general force system, okay, or non-concurrent, non-parallel forces. So what is this non-concurrent and non-parallel forces? See, इसका नाम पढ़ते हैं non-concurrent, मतलब ये फोर्सेस है एक ही पॉइंट से पास नहीं होंगे, they all the forces do not pass through a common point. तो non-concurrent and non-parallel, parallel भी नहीं है, मतलब वो फोर्सेस जो concurrent भी नहीं है, मतलब एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं एंड आपस में parallel भी नहीं है। So ये कैसा हो सकता है? एक एग्जांपल देख लेते हैं non-concurrent, non-parallel forces की। So let's see, एक फोर्स ऐसा है, लेट इट बी एक फोर्स ऐसा है, लेट इट बी एक फोर्स ऐसा है, और क्या हो सकता है बताइए? लेट इट बी लाइक एक फोर्स ऐसा है, इसको ले लेते। So let it be, this is F1, this is F2, this is F3, this is F4. So this is the example of non-concurrent, non-parallel forces. और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं जनरल फोर्स सिस्टम। ओके, ये फोर्सेस देखिए, they are not concurrent because they all forces are not passing through a common point. So they are non-concurrent forces and non-parallel. These forces are not parallel to each other. They are intersecting each other. So this is the example of non-concurrent, non-parallel forces. Okay. Now next one is non-coplanar forces. मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होते हैं ऐसे फोर्सेस जो डिफरेंट प्लेन्स पे होते हैं, नॉन-कोप्लानर फोर्सेस कहलाते हैं। हमने फिगर बना के आपको समझाया भी था। इसकी क्लासिफिकेशन में फर्दर आता है कॉन्करेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल और जनरल फोर्स सिस्टम। सी दिस ऑल क्लासिफिकेशन दे हैविंग द सेम मीनिंग एंड सेम डेफिनेशन एज इन द कोप्लानर फोर्सेस। ये जो नॉन कोप्लानर फोर्सेस की ये जो तीन डेफिनेशन और इसके मीनिंग सेम है, क्या? कॉन्करेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट, नॉन, दे हैविंग द सेम मीनिंग एज लाइक इन कोप्लानर फोर्सेस, but only difference is that they are in the different plane. I think this is clear to all of you. That's all for today and I am very happy if you gain something from this video. Okay, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आपके पास जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू ऑल।